things whatever we have studied. Lesson number 10, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, ये कंपलसरी चैप्टर है. इस चैप्टर में से कंप्लीट जो कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है. सो ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम दिस लेसन they are important. Okay, human health and disease. Now from this chapter we studied some definitions like what is health, then we studied the definition of immune system, then definition of immunology, antigen, antibody. आई होप कि आपका अभी तक ये लर्न हो चुका होगा डेफिनेशंस. ठीक है, उसके बाद फिर हमने स्टडी किया. We started with types of immunity. Two types of immunity, innate and acquired. Innate is the inborn ability, inborn capacity to prevent diseases. And second is acquired. Acquired immunity is which we acquire during our lifetime. ठीक है. नाउ इनेट इम्यूनिटी के कुछ हमने बैरियर्स देखे. इनेट इम्यूनिटी हमें कुछ बैरियर्स ऑफर करती है. व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स? लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, देन द सेल्यूलर कंपोनेंट, सेल्यूलर फैक्टर्स. उसके बाद फिर देखा हमने एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यू. सो यू शुड रिमेंबर दीज फैक्टर्स, राइट? एपीपीज एंड फीवर, ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, बैरियर्स याद रखने हैं इनेट इम्यूनिटी के. इसके बाद फिर हमने कल स्टडी किया acquired immunity. Acquired immunity is also known as adaptive or specific immunity because it acts against a particular type of antigen. Hence it is called specific immunity. Acquired immunity is further divided into two types. ठीक है, उसके पहले हमने देखा unique features of acquired immunity. What are the unique features? That it first feature is specificity. It is very specific to each and every antigen. Next is diversity. It can recognize diverse, a vast variety of pathogens. Discrimination between self and non-self. Acquired immunity can distinguish our own body cells and foreign particles. Last is memory. Memory is very important. Acquired immunity keeps the memory of first encounter. Okay, and second time acquired immunity, it is ready to fight against that particular pathogen. So that is memory. These are the unique features, 4 features. I told you to remember this because a question can be asked for 2 or 3 marks based on this features. Next फिर हमने देखा types of acquired immunity. Acquired immunity is of 2 types, simply 2 types, active voice, passive voice. Simply ऐसे याद रखना है आपको, active and passive. अभी active and passive, both this immunity, they are further classified into natural and artificial. ठीक है. So active immunity is of 2 types, natural acquired active, artificial acquired active. With examples you have to remember this. Natural acquired example is measles attack. Okay, once a person after recovering from a measles attack or a chickenpox attack, next time his body will be ready, will be prepared, will acquire the immunity to fight against that pathogen next time. Next is second artificial acquired example, vaccine. Simply example क्या है उसका? vaccination. That is artificially we are taking antigens and then we are telling our body to prepare antibodies to fight against that particular antigen. Next हमने देखा पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव क्यों बोला गया है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनते, ये एंटीबॉडीज हम रेडीमेड लेते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स. हेंस इट इज कॉल्ड पैसिव. वी आर टेकिंग इट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. इसके 2 टाइप्स, नेचुरल when a fetus or an infant gets ready-made antibodies from the mother. Next is artificial acquired immunity. Your example is taking ready-made antibodies from humans or hyper immunized horses. यानी जो हॉर्स होते हैं उनको इंजेक्शन दे दे के उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है. दैट इज नोन एज हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस. एंड देन their serum is collected and the antibodies, they are then injected into that particular individual. So that is artificial acquired. So with example you should remember this. डन हो गया ये टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमने देखा सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम. हमारी हम जो बोलते हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम, ये कौन एक्चुअली यहाँ पे रोल कौन प्ले करता है? सो 2 टाइप के सेल्स है, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स.
Okay, so first we started with lymphocytes. Lymphocytes, you know, these are the smallest type of WBCs. Lymphocytes, they have a big nucleus. Lymphocytes play a major role in immune system. Now lymphocytes are of two types. कौन से? B lymphocytes and T lymphocytes. I told you yesterday that the lymphocytes, they are formed by in the bone marrow by the stem cells. हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स होती है बोन मैरो में, एंड इन दैट बोन मैरो द lymphocytes, they are produced. But the B lymphocytes, they are produced in bone marrow and they get matured in the bone marrow itself. Hence they are known as B lymphocytes, or they are also known as bursal lymphocytes. बुर्सल क्यों बोला गया है? Because they might mature in the tonsils or they might mature in the pairs patches of intestine. Hence they are known as B lymphocytes. दूसरा कैटेगरी है T lymphocytes. T क्यों बोला जाता है? Because ये lymphocytes bone marrow में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये मेच्योर कहाँ होते हैं? थाइमस. You know thymus gland, it is present in between the two lungs, right? Temporary endocrine gland, thymus. So the lymphocytes through the via the blood, they travel up to the thymus and then they get matured in the thymus. So that is T lymphocytes. ठीक है, तो ये हमने देखा फर्स्ट cells of immune system. Lymphocytes, two types, B and T. So you should be able to know, tell that why it is known as B lymphocytes and why the other one is known as T lymphocytes, where they are formed, at what location they are formed, and what location they get matured. ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है. ठीक है, next let's move further. Now let us understand the mechanism of response of T lymphocytes. मतलब ये जो टी लिम्फोसाइट्स है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं अगर कोई पैथोजेन, whether it is a bacteria, whether it is a virus, whether it is a fungal spore, if it enters inside our body, then how this T lymphocytes they work, वो क्या प्रोसेस होता है वो अभी हम पढ़ रहे हैं अंडर मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स of T lymphocytes. On coming in contact with an antigen, a T lymphocyte forms clones of T cells in which are similar but they perform different functions. तो देखो, once the T lymphocytes they come in contact with an antigen. What is the antigen? Antigen can be any foreign molecule which is not known to our body. So that is the antigen. When our body comes in contact with any antigen, the T lymphocytes they start producing clones. क्लोन्स का मतलब क्या होता है? क्लोन्स यानी सिमिलर सेल्स, एग्जैक्ट फोटोकॉपी, एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी ऑफ दैट टी लिम्फोसाइट्स. तो इस तरीके से क्लोन्स फॉर्म होंगे टी लिम्फोसाइट्स के बाय अंडरगोइंग माइटोसिस. ओके, माइटोसिस डिवीजन होगा. द टी लिम्फोसाइट्स दे विल डिवाइड quickly and they will form clones, okay, which are similar but they perform different function. So structurally they are similar, all the clones, but they perform different kinds of functions. So जो भी सारे T lymphocytes है उनके 4 ग्रुप्स बनते हैं. इनिशियली एक ही T lymphocyte था, वो T lymphocyte डिवाइड होके उसके काफी सारे कॉपीज बन गए और इतना सारा एक बड़े कॉलोनी में से 4 ग्रुप्स बनते हैं. 4 ग्रुप्स आर फॉर्म्ड. फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड हेल्पर टी सेल्स. Now as the name only says, helper means they are helping someone, right? So see, sensitized helper T cells. Sensitized का मतलब क्या है? The T lymphocytes when they come in contact with antigen, it is known as sensitized helper T cells produce lymphokines for performing several types of function. Lymphokines क्या है? Lymphokines are the you can say chemicals which are produced by the lymphocytes. Okay, sensitized helper T cells produce lymphokines for performing several types of functions. Like, so when this helper T cells they are sensitized, they produce lymphokines. Lymphokines क्या करते हैं?
proliferation of other T cells. The release of lymphokines, it helps in proliferation means multiplication of other T cells, as well as stimulation, activation of B lymphocytes and macrophages. तो इन शॉर्ट ये हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, बाकी जो इम्यून सेल्स है जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स है और मैक्रोफाजेस है, उनको मल्टीप्लाई होने में, उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं हेल्पर टी सेल्स बाय प्रोड्यूसिंग lymphocytes. Is it clear to you? We are studying types of T lymphocytes. Okay, T lymphocytes, when they come in contact with antigen, they form clones. They form many T lymphocytes. All these T lymphocytes get grouped under 4 groups. First group is helper T cells. Second group is called killer T cells. Killer or cytotoxic. Now the name only says killer means these T cells are going to kill the antigen. Cytotoxic means they are toxic, they are harmful for the antigen, not for our body. They directly attack and destroy the invading microbes. So see, ये जो killer T cells होंगे ये क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन पार्टिकल है, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे. इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स एंड कैंसर सेल्स. सो हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या फिर कैंसरस सेल्स है, उनको भी किल करने का काम टी सेल्स करते हैं. लेकिन जब कैंसर के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं कैंसर के, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. तो इनिशियल स्टेज में हमारी इम्यूनिटी विल kill those cancer cells, but after some limit, if the tumors they grow unlimitedly, then our body does not control that, and hence then they require treatment. Killer T cells bind to infected cell and secrete perforins. Yes, please do underline this. Lymphokines. Helper T cells क्या प्रोड्यूस करते हैं, lymphocytes. Killer T cells क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं, perforins. Please do underline. These perforins form a hole in the infected cell. Perforation, perforated sheets जिनके ऊपर holes होते हैं. Similarly, ये जो killer T cells है, ये क्या करते हैं, these killer T cells, they, suppose this is an antigen particle, the killer cells will secrete perforins, and these perforins they will act on this infected cell and they will produce holes on that antigen particle and वो antigen को पूरा destroy कर देंगे. It also releases substances that kill the cell, hence the name cytotoxic T cells. तो ये जो killer T cells है, they directly kill, destroy the antigen molecule, hence the name is cytotoxic T cells. Are you getting what we are studying? Types of T lymphocytes, mechanism of response of T lymphocytes, how T lymphocytes they differentiated into different groups. पहला helper T cells, second killer T cells, third is suppressor T cells. Suppress हमने पढ़ा था मेंडल के चैप्टर में, express, suppress, right? Similarly here, these cells suppress entire immune system against attack on the own body cells. तो ये जो टी सेल्स होती है, सप्रेसर टी सेल्स, ये क्या करती है, हमारे बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करती है. ओके, किससे प्रोटेक्ट करती है, जो भी ये किलर टी सेल्स है. ऐसा भी हो सकता है ना कि किलर टी सेल्स हमारी खुद की बॉडी सेल्स को मार दे, तो वो प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, suppressor T cells. The suppressor T cells, they suppress entire immune system against attack on the own body cells. यानी हमारी खुद की बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यूज पर अटैक होने नहीं देता by suppressing their attack. That is a suppressor T cells. Simple to understand. And next is last one is memory T cells. अब इनका काम क्या होगा, to keep a memory. These are previously sensitized cells which retain the memory, the sensitization memory for a long time in the future. तो memory T cells क्या करेंगे, किसी एंटीजन ने अटैक कर दिया हमारी बॉडी के ऊपर, तो ये मेमोरी टी सेल्स वो मेमोरी याद रखेंगे, ठीक है, कि यस
ये पहले भी इसने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर किया था. So ये मेमोरी कौन रखेगा? फॉर फ्यूचर दिस मेमोरी विल बी केप्ट बाय द मेमोरी टी सेल्स. Simple. Are you getting? Say yes, no, give some reply. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. काफी इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है. हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर एंड मेमोरी टी सेल्स. सो दिस 4 यू शुड रिमेम्बर. ठीक है, ये क्या था? टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स टू एंटीजन. हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम. उसमें हम पढ़ रहे हैं लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स होते हैं दो टाइप्स के, बी और टी. तो हमने देखा कि टी लिम्फोसाइट्स कैसे वर्क करते हैं. अभी हम देखते हैं आगे कि बी लिम्फोसाइट्स कैसे काम करते हैं. The B lymphocytes are sensitized directly by both antigen as well as the helper T cells. तो देखो helper T cells में हमने क्या पढ़ा था? That the helper T cells they stimulate B lymphocytes. यानी जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो सबसे पहले T lymphocytes, helper T cells, उनको पता चलेगा और helper T cells क्या करेंगे? जो बी लिम्फोसाइट्स है उनको एक्टिवेट करेंगे. ओके, सो द बी लिम्फोसाइट्स दे आर सेंसिटाइज्ड by the antigen or they are sensitized by the helper T cells. Activated B lymphocytes multiplies very fast to produce clone of plasma cells and memory B cells. तो जो activated B lymphocytes है वो क्या करते हैं? They also produce clone, but they produce clones of plasma cells and clones of memory B cells. ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स के तो मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स. द प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस्ड स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडी. प्लीज डू अंडरलाइन दिस. अंडरलाइन. हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? फंक्शन कौन करता है? सो दैट इज द प्लाज्मा सेल्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. दिस कैन बी आस्क्ड फॉर MCQ. which are circulated through body fluids like blood and lymph. तो ये जो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे प्लाज्मा सेल्स, वो एंटीबॉडीज दैट विल बी रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द बॉडी फ्लूइड, दैट इज द ब्लड एंड द lymph. The antibody molecules may bind to a cell membrane or they remain free. तो ऐसे हो सकता है कि that antibodies they will bind to some cell membrane or they will remain free in the blood. Are you getting? We are studying types of B lymphocytes. B lymphocytes, when they are activated, when they are attacked by antigen, they start producing clones. Two type of clone cells, plasma cells and memory B cells. The plasma cells, they further produce very important glycoproteins called as the antibodies, and these antibodies will fight against the antigen. ठीक है. Now the helper B cells, the free antibodies have three main functions. तो जो एंटीबॉडीज फ्रीली मूव होती है ब्लड में, उनके 3 फंक्शंस होते हैं. एंटीबॉडी कैसे फाइट करती है अगेंस्ट एंटीजन? तो 3 फंक्शंस. दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क. ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज ऑप्सोनिसेशन? दिस वाज आस्क्ड recently. What is opsonization? What is agglutination? Okay, so please mark it, important. So agglutination of particulate matter including bacteria and viruses, the immobilized mass is then engulfed by the phagocytes. So when the antibody, when it comes in the contact with the antigen, then that antibody, it agglutinizes the bacteria or the virus. The immobilized mass is then engulfed by the phagocytes. अग्लूटिनाइज करना यानी जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरस मॉलिक्यूल है, उसका एक ग्रुप बना देगा एंटीबॉडी, उसका एक क्लस्टर बना देगा, एंड देन दैट क्लस्टर विल बी ईटन, विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द फैगोसाइट्स. फैगोसाइट्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, हमने WBC में पढ़ा था, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स,
so they will engulf, then that agglutinized the clustered bacteria or virus. लेकिन ये क्लस्टरिंग का काम कौन करता है? एंटीबॉडीज. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड agglutination. ओके, नेक्स्ट इज ऑप्सोनिसेशन. ऑप्सोनिसेशन का सिंपली मतलब होता है कोटिंग, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया to facilitate their subsequent phagocytosis by macrophages. So what antibodies will do? Antibodies will put some coating on the bacteria. तो फिर वो जो कोट की गई बैक्टीरिया है वो इजीली फिर मैक्रोफेजेस उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे. दैट इज नथिंग बट ऑप्सोनिसेशन. वर्ड्स डिफिकल्ट है लेकिन मीनिंग काफी सिंपल है, समझ चुके होंगे आप. नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन. ओके, ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया. जो भी बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज करेगी वो सारे टॉक्सिन्स एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज कर देंगे उनका इफेक्ट, ताकि हमारे बॉडी पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट ना हो. एग्जाम्पल, टिटेनस टॉक्सिन. The tetanus toxin which is released by the bacterium, its effect is neutralized by that specific type of antibodies produced by the plasma cells of B lymphocytes. Each antibody is specific for a particular type of antigen. Please do underline this. हर एक एंटीबॉडी हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है. ओके, सो दैट्स इट अबाउट बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स में आप याद क्या रखोगे? इट फॉर्म क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स. Plasma cells produce antibodies. Memory cells will keep the memory of that particular antigen. The plasma cells produce antibodies, and these are the functions of antibodies: agglutination, opsonization, and neutralization. Is it clear? Now, so with this we have completed with first type of cells of immune system, that is lymphocytes. Now let us study the second type of cells of immune system, antigen presenting cells. अभी ये क्या है? antigen presenting cells. Antigen presenting cells engulf invading pathogens and process the antigens. तो ये cells होती है specific cells immune system की, APC antigen presenting cell. What they do? They directly attack on the antigen and engulf it, destroy it, and जो भी and process the antigens. जो antigens है उनको processed कर देते हैं. Then the processed antigens are presented on their surface. These cells are able to deliver a stimulatory signal that is necessary for activation of helper T cells. Simply क्या करते हैं? APCs, antigen presenting cells, they directly attack on the antigen, and जो फिर वो dead antigen है, that antigen is presented on the cell surface of APCs, so that the other cells, that is the helper T cells, they may get activated. Okay, when helper T cells will see that particular antigen on the surface of antigen presenting cell. Simply इसका मतलब क्या है? एक सेल है, उसके सरफेस के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट किए गए हैं, that is nothing but antigen presenting cells. क्यों ये ऐसे प्रेजेंट करता है एंटीजेंस को? ताकि जो बाकी इम्यून सिस्टम के सेल्स है वो एक्टिवेट हो पाए. बस, दैट्स इट अबाउट APCs. सो छोटा सा ही पैराग्राफ है, बट यू शुड रिमेम्बर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स डायरेक्टली एनगल्फ द पैथोजेंस. ठीक है, सो दैट्स अबाउट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड द मैकेनिज्म हाउ दे वर्क. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज वैक्सीनेशन. ठीक है, अभी सभी को वैक्सीन ये वर्ड काफी फेमस हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड ऑल, राइट? सो वैक्सीनेशन क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड इट्स working mechanism, what vaccines actually do in our body. So let us understand that. Administration of vaccine, that is inactivated pathogen or antigenic protection of particular pathogen. तो वैक्सीन क्या है? inactivated pathogen or antigenic protection of particular pathogen. मैंने कल ही आपको बताया था, जब वैक्सीन बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? दे टेक वीकेंड, वीकर, जो भी वीक
बैक्टीरिया है, वायरस है, वो वीक मॉलिक्यूल्स लेकर वैक्सीन बनाते हैं। और वो वीक बैक्टीरिया और एंटीजन वो एक तो वीक होते हैं या फिर कंप्लीटली डेड होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। सो थोड़ा concentration, weak concentration of this bacteria also helps in producing antibodies in our body. Hence we take a vaccine to stimulate our immune system. वैक्सीन का रोल क्या है? To stimulate production of antibodies in our body. ठीक है, to protect against a particular pathogen is called vaccination. Please do underline this. This can be asked for 1 mark. What is vaccination? 1 mark का question है, simple to answer, but that answer should be in this perfect proper statement. Next, the body's immune system helps to protect against pathogens that cause infection. It's an efficient system most of the time. It either keeps microorganisms out or tracks them down and gets rid of them. However, some pathogens can overwhelm the immune system. When this happens, it causes serious illness. The pathogens most likely to cause problems are the ones the body doesn't recognize. Vaccination is a way to teach the immune system as how to recognize and eliminate the pathogenic organism. Simply और एक meaning दिया गया है vaccination का. Vaccination is what? It is a way to teach our body cells that how to recognize a new foreign particle and how to eliminate that foreign particle from our body. That way body is always prepared if you are ever exposed. So if you have taken vaccine, then your body is already prepared to fight against that particular type of pathogen. Vaccination is an important form of primary prevention. So vaccination ये क्या है? ये एक टाइप का primary prevention है that can protect people from getting sick. Vaccination has allowed us to control diseases like measles, polio, tetanus, and whooping cough that once threatened many lives. So when the vaccine was not available on these diseases, so people suffered a lot from these particular diseases. But nowadays, you know, बच्चा पैदा होने के बाद ही से उसके सारे वैक्सीनेशंस शुरू हो जाते हैं. पोलियो तो सबसे कॉमन होता है, उसके बाद एक होता है बीसीजी, यहाँ पे लगाया जाता है एंड दिस पार्ट आर्म के ऊपर, आपके इधर भी निशान होगा, देखो ऐसा बड़ा राउंड निशान होता है, दैट इज अ बीसीजी वैक्सीन. ओके, एंड मेनी मोर वैक्सीन नाउअडेज, यू नो, जैसे जितने डिसीजेस बढ़ रहे हैं उतने टाइप के वैक्सीन दिए जाएंगे बच्चों को. ठीक है, vaccinations don't just protect individuals. When enough people are vaccinated, it also helps to protect the society. So vaccination not only it protects that particular individual, but it also protects a complete society. ठीक है, now let us understand how the vaccines work. वैक्सीन एक्चुअली काम कैसे करते हैं हमारी बॉडी में? Healthy immune system defends against invaders. Immune system consists of several type of cells. अभी हमने देखे immune system में अलग अलग type के cells होते हैं. These cells defend against harmful pathogens. These cells help our body to fight against harmful pathogens. However, they have to recognize an invader. But इसके लिए they, our body immune cells, they must first recognize that particular type of antigen. Vaccination teaches our body to recognize new pathogens causing disease. It stimulates the body to make antibodies against antigens of pathogens. So please do underline this. This part is important. Vaccine क्या करता है? Vaccine stimulates our body to make antibodies to fight against antigens of pathogens. Okay. It also primes immune cells to remember the type of antigen, that is the characteristic memory wala characteristic. This allows a faster response to the pathogen in future. तो अगर already आपके cells में memory है
किसी एंटीजन का, तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आपको वो डिसीज होने वाला है, सपोज हो रहा है, तो आपकी बॉडी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी है ऑफ द फर्स्ट अटैक. Vaccines work by exposing you to a safe version of pathogen. Vaccines may be in the form of, so vaccines किस form में होते हैं? It can be a protein or sugar from the pathogen. So किसी भी pathogen का protein layer या फिर sugar layer होगा vaccine में, या फिर dead or inactivated form of pathogen. सो ना अभी ये जो कोरोना वायरस का वैक्सीन होगा, तो उसमें एक्चुअल में क्या होगा? उसमें होगा वो डेड एंड इनएक्टिवेटेड पैथोजन दैट कॉजेस कोरोना वायरस. सिमिलरली हर एक वैक्सीन में ऐसे ही होता है, इनएक्टिवेटेड या फिर डेड form of that pathogen or a protein or a sugar from that pathogen, or toxoid containing toxin produced by a pathogen. अभी just understand what is the meaning of toxoid. For example, कोई एक पैथोजन है, एंटीजन है, और वो पैथोजन एक स्पेसिफिक टाइप का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है. So one pathogen, it is producing specific type of toxin. So whenever that toxin is used as a vaccine, ठीक है, whenever that toxin in a weaker form, हाँ वो डायरेक्ट टॉक्सिन नहीं देते हमारी बॉडी में, उस टॉक्सिन को वीक किया जाता है, ठीक है, उसका जो भी इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज होता है, काफी कम इफेक्ट होता है, वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड. सो दैट देन सब्सटेंस इज कॉल्ड एज टॉक्सॉइड. diluted toxin, it is nothing but toxoid. A toxoid containing toxin produced by the pathogen. So vaccine में एक तो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस होते हैं, या फिर प्रोटीन और शुगर्स होते हैं ऑफ द पैथोजेंस, या फिर पैथोजेंस का टॉक्साइड होता है. अ वीकेंड पैथोजन और सिंपली डायरेक्टली अ वीकेंड को और एक दूसरा नेम है एटीन्यूटेड. एटीन्यूटेड मीन्स वीकेंड पैथोजन. When the body responds to the vaccine, it builds an adaptive immune response. So whenever our body it responses to the vaccine, our body builds acquired immunity, that is adaptive immunity, immune response. This helps us to equip the body to fight off an actual infection. तो अभी हमने क्या कर लिया, हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर दिया, ताकि रियल में जब कोई पैथोजन अटैक करे तो हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हो टू फाइट अगेंस्ट दैट एंटीजन, ठीक है. अंडरस्टूड. वैक्सीनेशन, ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट वैक्सीनेशंस आर सेफ. Vaccines are considered to be safe. They are rigorously tested and go through many rounds of study, examinations and research before they are used for the general public. Now you know this well. जो भी vaccines जिन्होंने अभी find out किए हैं, so that vaccines they have to go through many rounds, many testings, right? Extensive research and evidences show that vaccines are safe. Their side effects are rare and typically mild. तो vaccines almost safe होते हैं. They don't have side effects. If they have, then that will be mild side effects, not major. ठीक है. So that is about vaccination. Now the next topic is structure of antibody. This diagram can be asked, it might be asked, explain the structure of antibody or draw neat label diagram structure of antibody. So you have to draw this diagram for homework. ठीक है. आज का होमवर्क क्या होगा आपका? आई नो योर टेस्ट आर गोइंग ऑन, राइट? एवरी अल्टरनेट डे यू आर हैविंग टेस्ट, बट you should do the homework. I think that you should at least read the part which you are studying daily and quickly write it down. That's it, nothing else. इसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ आप 2 घंटा लगा दो होमवर्क करने में. ओके, हाफ एन आवर इज इनफ. मैं ज्यादा होमवर्क नहीं देती और आपको ऐसा होमवर्क नहीं देती मैं कि आपको सोचना पड़े. लाइक इन फिजिक्स एंड मैथ्स यू हैव टू सॉल्व इट, right? And so you require more time, but here you just have to read and you just have to write it down, so it will not take a long time, right? So please do the homeworks. आज का homework होगा mechanism of response of T lymphocytes to antigens, ठीक है. और simply what you can say, the 4 types of T lymphocytes. Explain
द 4 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो बस आप इनके बारे में लिखोगे, जो आपको इसमें से समझ आता है वो आप लिखो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट सेम एज इट इज, छाप दो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। पढ़ो, जो समझता है राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। दूसरा क्वेश्चन होगा टू राइट अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। एक छोटा फ्लो चार्ट बना दो। आप ये पढ़ो पैराग्राफ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड मेक अ फ्लो चार्ट कि बी लिम्फोसाइट्स, क्या लिखोगे? बी लिम्फोसाइट्स गेट्स स्टिम्युलेटेड, produces clones of two types, plasma cells and memory B cells. Plasma cells further produce antibodies. Likewise, go on making a flow chart simply. No need to write all theory. Okay, fine. तो ये होगा दूसरा होमवर्क। तीसरा होमवर्क होगा what is vaccination? Simply 1 mark question. What is vaccination? ठीक है। And okay, so 3 questions given for homework, very short answer type of questions. Just read and write. Next is structure of antibody. So this will be your 4th homework. ठीक है, ये 4th होमवर्क होगा आपका, टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हम बोल रहे हैं, लेकिन वो होता कैसे है, कैसे वर्क करता है, कैसे दिखता है? सो दैट दिस इज नथिंग बट द एंटीबॉडी। सो सी, नाउ लेट अस फर्स्ट ऑब्जर्व द डायग्राम। व्हाट थिंग्स यू ऑब्जर्व हियर? सी, यू कैन सी सम चेन्स, इसे बोला जाता है चेन्स, राइट? Variable region of heavy chain. You can see this is a heavy chain and this is known as a light chain. Okay, this is variable region of heavy chain, this is variable region of light chain. Both these chains, they are attached to each other with the help of disulfide bond, SS, disulfide bond, chemistry में आप पढ़ते हो। this is light chain, this is heavy chain, this is variable region of light and variable region of heavy chain, ठीक है। और ये दूसरा, ये जो पार्ट है येलो कलर, दिस इज नोन एज कांस्टेंट रीजन, दिस इज कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन, दिस इज वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन। अलग अलग कलर्स में दिखाया गया है ताकि आप समझ पाओ। दिस इज कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ठीक है। ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट। देखो आप यहाँ पे एक ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है, तो जो भी एंटीजन होगा, स्पेसिफिक एंटीजन विल बाइंड ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी इन अ लॉक एंड की मैनर, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे बाइंड होते हैं? दैट इज नोन एज इन लॉक एंड की एनालॉगी। जैसे specific lock has a specific key, similarly here a specific antibody will have a specific type of antigen, ठीक है। Now this is a hinge, actually a joint which is known as hinge. So that's it, simple structure for क्या करना है आपको? पहले एक Y shaped structure ड्रॉ करना है और उस Y को ही आपको साइड में बस यहाँ पे दूसरी चेन ड्रॉ करनी है, ठीक है। So see, antibodies are glycoproteins. This you should remember. Antibodies are nothing but glycoproteins which are highly specific to specific antigens. They are also known as, जो मैं सबसे पहले दिन से बता रही हूँ आपको, they are also known as immunoglobulins, IgS. In MCQs IgS अगर ऐसा मेंशन किया होगा, उसका मतलब क्या है? एंटीबॉडी। immunoglobulins are produced in response to antigenic stimulation. Antibodies are produced by plasma cells which in turn are formed by B lymphocytes. ये अभी हमने पढ़ा, antibodies कौन बनाता है? The mature plasma cells produce antibodies at an extremely rapid rate, that is about 2000 molecules per second. See, आप इमेजिन करो कि पर सेकेंड 2000 molecules of antibodies are produced by the plasma cells. Structure. So what is the structure? The structure is mentioned here. Antibody is a Y-shaped molecule. You can clearly see antibody Y-shaped structure है. Each immunoglobulin molecule is made up of 4 polypeptide chain
as it is a type of protein, so proteins are made up of polypeptide chains, right? Amino acids join together to form a long chain which is known as polypeptide chain. So antibody is made up of four types of chains, polypeptide chains. These are two heavy chains, H chains, and two light chains. Similarly, you can see दो heavy chains आपको नजर आती है और दो light chains. Next, the four polypeptide chains are held together by disulfide bonds to form a Y-shaped structure. Both this heavy and light chain, they are attached to each other with the help of disulfide bond. The region holding together arms and stem of antibody is called as hinge. So you can see this is a hinge. Next, each chain of antibody include two distinct regions, variable region and constant region. I have shown you that variable regions constitute the antigen binding site. Underline this. Underline karo ise. Variable region constitute the antigen binding site paratope. Paratope, epitope can be asked for 1 mark question. What is a paratope? Paratope क्या है? Suppose ये है हमारा एंटीबॉडी. इस एंटीबॉडी के ऊपर कैन यू सी दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है यहाँ पे एंटीजन मॉलिक्यूल फिट होगा. सो दिस साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड पैराटोप. पैराटोप. ठीक है. नेक्स्ट, this part of antibody recognizes and binds to the specific antigen to form an antigen antibody complex. Since most antibodies carry two antigen binding sites, they are said to be bivalent. तो देखो सिंपली ये एक एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी के ऊपर दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आपको नजर आती है. So hence it is known as bivalent and this site is called paratope. ठीक है. Next, formation of antigen and antibody complex. So see this second diagram. Here you can clearly see ये है हमारा एंटीबॉडी, ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है ये है एंटीबॉडी और देखो ये है एंटीजन. यहाँ पे ग्रीन कलर का एंटीजन, इसका शेप देखो. यहाँ पे है स्पेरिकल एंटीजन, उसका शेप देखो. तो जैसे एंटीजन का शेप बदलता है उसी तरीके से ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज दे विल आल्सो चेंज देयर साइट, देयर शेप एट द paratope site. So this is how the antibody it binds with the antigen to form antigen antibody complex. तो simply ये antibodies इस antigen को bind करेगी और उसका जो antigen का जो भी harmful effects है उसे destroy कर देगा by binding it. So tomorrow we will study in more detail about formation of antigen antibody complex and काफी simple एक topic है ABO blood group system. ये हम पढ़ेंगे, ये chart important है. ठीक है. Who can donate blood to whom? Who is known as universal donor? Who is known as universal receiver? Everything interesting topic है ये overall और light chapter है, ज़्यादा tension लेने की बात नहीं है. ठीक है. So that's it for today. 3 questions given for home, 4 questions given for homework. Last question was the diagram structure of antibody. Okay, try to do the homework. I know your tests are going on, but still whenever you get time, so please do your homework. It will not take too much time. Okay, that's it for today. Any doubts? Yes, yes, anyone? No. Okay, okay, fine. Chalo then, bye, see you tomorrow. Bye, bye, bye.